लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? सोक्रेटिस डिस्कस कर रहे थे. ओके. Briefly talked about Socrates, right? Hmm? And we discuss Socrates का life थोड़ा सा बारे में बताया. Socrates बता दिया था. Sorry. Poison उनको दिया गया था, बता गया. अच्छा अच्छा अच्छा. Good good. So he actually had given hemlock to die, and he had taken poison and he died. And the entire episode had changed the one person. His name was Plato, right? But what is the importance of Socrates? That is a question, right? Why do you study Socrates? I told you that Socrates was the first person who actually raised basic ethical question, a fundamental question, a very just question, right? About human being, about good life, about state, right? About God, when uh, and his method. Look at his method, called Socrates' method. What was Socrates' method? Socratic method. His method was dialectical method, right? Was dialectical. What do you mean with dialectical here? Dialectical here, he used to discuss, debate, and then defeat the, opposition, and then establish a truth. That was the method, right? Dialectical method, it means that is debate and discussion based on logic, and rationality, right? To, to defeat, right? To defeat his opposition. And establish truth. Truth. Right? Hi, Sweta. Good morning. I hope you are good. So we have taken, we have just initiated what is Socrates' method. And Socrates' method was dialectical. Dialectical means, debate and discussion based on logic and rationality to defeat, his opposition and establish truth. Right? If you look at Socrates was also teleological. Teleological means, he was telling something for the purpose, right? And purpose was ethical conduct in the state, right? So his method was also teleological. Teleological method. It means, stating something or proposing something for larger good, larger good of state and society. That was his method. And let me tell you, not only he, but Plato opted the same method. Plato's method was similar, right? Teleological method. What is teleological method? When you are doing something for some
some purpose. That is called teleological method. Right? Therefore, our study is only simply teleological. We are studying for the UPSC examination. Right? So his method was also to, to have a larger good, right? A good life, right? A happy life, a prosperous life in the state and society. Right? Now let me tell you, Socrates, what Socrates famous for, right? Socrates is famous for his philosophical, proposition, right? Proposition. Like he said, knowledge is virtue. He said, knowledge is virtue, right? Knowledge is virtue, right? And he said, the unexamined life is not worth living. The unexamined life, he further said that unexamined life, the unexamined life is not worth living. This is a famous statement by Socrates, right? Right? Or knowledge, make someone, knowledge make someone to act in the right direction. Knowledge makes someone in act to right direction. Right? One is knowledge is question. Knowledge in question is the knowledge of the universal good. Knowledge of the universal good. Good. Right? Now, the famous statement, very famous by the Plato, Socrates, that he said, he used to say, I am the wisest man alive, and I know one thing that I know nothing. Yeah. He used to say, I am the wisest man alive. I am the wisest man alive, and I know one thing, and I know one thing that I know nothing. I know one thing that I know nothing. This was the famous statement by Socrates. Hmm? Should I, yeah, back? Not it done? Socrates is famous for his philosophical proposition, like knowledge is virtue. He said, the unexamined life is not worth living. Knowledge makes someone to act in right direction. Knowledge in question is the knowledge of the universal good. He used to say that I am the wisest man alive, and I know one thing that I know
nothing, nothing. देखो मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान हूं जिंदा, राइट? बस मैं एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं. I know one thing, that I know nothing. Now look at each line has its own philosophy. Each line has its own philosophy. For example, knowledge is virtue, right? Now, what is virtue? Virtue means excellence, right? Like truthness. Truth is a virtue. Honesty is a virtue. Righteousness is a virtue. Similarly, knowledge is a virtue. Socrates gave primacy to knowledge. He gave primacy to knowledge, and for him, everyone should acquire knowledge of their choice. जो जिनको जो भी इच्छा है उसको उनको एक्वायर करना चाहिए, नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, राइट? व्हाई? बिकॉज इट ब्रिंग्स एक्सेलेंस इन इंडिविजुअल्स लाइफ. It makes individual a good human being, a good citizen, right? It enables individual to live a good life, right? Isn't it? तो एक तो ये काम है कि इन आपके नॉलेज आपके लाइफ को अच्छा करता है. दूसरा, सेकेंड, नाउ नॉलेज also tells you to inquire into that knowledge, right? It also tells you to inquire into the existing knowledge. For example, knowledge about the caste system, right? Now knowledge about caste system also compel you to think about the caste system itself, the existing caste system, whether we should follow it or so we should bring some changes in the existing of caste system or the patriarchy, for example, right? Right? What it will do to you? Now this knowledge will enhance your self development. The knowledge enhance your self development and personality, right? And he said each individual has capacity. He never discriminated individual, that no one has that is different capacity. No, he said every individual has capacity to acquire knowledge. Everyone can acquire knowledge, right? And each person should acquire knowledge according to their natural aptitude, what they have naturally suited to. For example, if someone is naturally loving guitar, then he should acquire knowledge of music, right? If someone is adventurous, right, want to join army, very much eager to understand and have no fear, even in under adversary condition, then he should acquire knowledge of defense and join army, right? Got the idea? Or now look at the second statement he made: the unexamined life is not worth living, right? Now he said जो लाइफ है ना, एग्जिस्टिंग लाइफ है ना, उसको एग्जामिन करना चाहिए कि हम जी कैसे रहे, है ना? एक एक लाइन में इनका जो है छुपा हुआ है, बहुत सारा बातें छुपी हुई है, राइट? कि अनएग्जामिन लाइफ शुड नॉट गो एज इट इज गोइंग ऑन. We must examine it. We must interrogate it. We must question it, the existing life, right? है ना? Why? Because it is good for individual moral and civic virtue. ये हमें moral and civic virtue को enhance करता है. ठीक है? ठीक है? एक चीज मैंने आपको जब बता रहा था तो मैं छोड़ गया. अच्छा, moral मतलब क्या होता है? जब मैं आपको बता रहा था बेसिक्स, तो देखो अभी याद आया. मोरल और इथिकल दोनों में क्या अंतर है? जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो समझ में आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है. व्हाट इज मोरल?
No. Moral means righteousness. Righteousness or right conduct. Right conduct. Good conduct. Good conduct. That is called moral. Right? Someone cheating someone is not moral. Right? Moral means righteousness, right conduct, and or the good conduct. Right? For example, honesty is a morality. राइट फॉर मॉरल साइंस बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चे कैसे करो तो बड़ों को प्रणाम करो उनको बोलो कि नमस्ते करो दिस इज मॉरल टीचिंग राइट कोई प्यासा है तो उसे पानी दो है ना किसी को गलत बात मत बोलो सबको ऐसी बानी बोलो जो सबको अच्छा लगे सबको भाई राइट दैट इज मॉरल मॉरल गॉट आइडिया एंड मॉरल कम्स फ्रॉम विद इन right family also teaches you several morality nahi family also teaches you morality religion sometimes teaches you morality if you look at there are different source of morality agar aap baat karenge the source of morality the source of जो morality है वो क्या क्या है एक तो family है जो आपको बताती है कि बेटा किसी से बुरा मत कहना है ना अच्छे से बिहेव करना जो लोग आए उनको वेलकम करना कभी प्यासे को पानी ऐसा नहीं कि पानी मत दो हाँ कोई मतलब कोई गिर जाए तो उसको उठा देना राइट जो बड़े बुजुर्ग है उनको हेल्प करना दिस ऑल आर मॉरल टीचिंग राइट सो फैमिली इज वन सोर्स ऑफ morality family teaches you morality now second is religion every family practices some kind of religion right every family right so religious teaching is something ki treat good speak truth डरो भगवान से डरो भगवान का सहारा लेते हैं डरो भगवान से डरो गलत मत करो राइट ऐसे करो कुछ गलत हो गया तो थोड़ा कुछ उसका कुछ आप क्या बोलते हैं उसको पाश्चाताप करो कहते ना राइट so religion is a now third is if you look at the source of morality is also the society or public सोसाइटी कुछ बातों को मॉरल कहती है कुछ बात को अमोरल कहती है राइट फॉर एग्जांपल इफ यू मैरी एट 5 o'clock sorry at the age of 5 years वो बोलेंगे गलत है if man or woman live together without marriage वो कहेंगे ये मॉरल नहीं है ये अच्छी बात नहीं है राइट सेम सेक्स मैरिज नेवर अलाउड बाय द सोसाइटी और पब्लिक ये अच्छी बात नहीं है फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला टेम्पल में जब वुमेन अंदर जा रहे थे नाउ सबरीमाला टेम्पल यू हैव हर्ड अबाउट दिस कंट्रोवर्सी वुमेन क्लेम्ड कि नो वी विल एंटर इनटू द temple Ayappa temple now public was saying no you cannot do that even if you look at the two same sex person right actually trying for the marriage public is saying no it is not good for the larger society right so society के लिए अलग morality होता है ना look at the constitution or law also defines morality that is different from society or religion or family right when morality is defined by the constitution it is called constitutional morality got the idea so there are different sources of morality मीडिया मीडिया क्या बोलेगी सही करने को क्या गलत करने को अच्छा yes media also tell you what is good what is right yeah you can say that
या सोसाइटी आ जाएगा, या कैन से दैट मीडिया, राइट। बहुत एन नंबर है, पीयर्स ग्रुप। पीयर्स मतलब दोस्त होता है ना, दोस्त का जो सर्कल होता है आपका, उसको बोलते हैं पीयर्स ग्रुप। दे ऑल्सो टीचेस मोरालिटी, ठीक है, राइट। द मोरालिटी मतलब राइट कंडक्ट। अच्छा, अब एक पेपर है इथिक्स, पता है ना आपको? अच्छा, इथिक्स का क्या मतलब होता है? हम्म हम्म या ethics is called something called morally correct। ये बिल्कुल उसी के बगल में बॉक्स बना के लिख लीजिएगा वहीं पर, या जहां पर, राइट। हर चैप्टर के बाद में एक दो पेज छोड़ दीजिएगा, क्या पता कब क्या ऐड करना पड़े। हम्म ethics means morally correct। Ethics is a branch of philosophy which tells us what is good and what is bad, what is right, what is wrong, what is correct and what is incorrect. That is ethics. What is ethics? Ethics is a branch of philosophy, right? Which tells us, लिख लीजिए, ethics is a branch of philosophy ethics is a branch of philosophy which tells us what is right or wrong, what is good or bad, what is right or wrong, what is good or bad, what is correct or incorrect, right? What is source of ethics? Now here you look at. Now if you see, then we said morality मतलब सर righteousness और ethics मतलब morally correct। भाई तो ये तो एक ही बात हो गई, यहाँ तो एक ही बात लगती है। फिर अंतर क्या है, राइट? अंतर क्या है? क्यों नहीं हम मोरालिटी ही रखें? ये पेपर वाले यूपीएससी वाले एथिक्स क्यों रख दिए, मोरालिटी रख देते, या एथिक्स एंड मोरालिटी रख लेते, है ना? उन्होंने एथिक्स क्यों रखा? नाउ लेट मी टेल यू, एथिक्स इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द स्टेट। एथिक्स इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय स्टेट, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन, state constitution, law. Ethics does not decided by the family. Ethics is something from outside, right? Ethics is something which is from outside. What a state, for example, we should participate in military whenever there is a crisis. Look at Ukraine. Now the common citizen have joined army to protect their own state. This is ethical virtue, right? This is also moral virtue. मोरालिटी कम्स फ्रॉम विद इन, ये अंदर से आता है, आपके अंदर से आता है कि ऐसा करना चाहिए, राइट? बट एथिक्स इज सम टाइम, यू नो, imposed from the state, coming from outside, like fundamental duty is an ethical conduct, right? अगर मान लो कि वो नहीं होता, चैप्टर 4A आर्टिकल 51A नहीं होता, right? So it was to be our moral conduct not to harm the environment, ठीक है? ठीक है? Otherwise if you look at DPSP also talks about not to harm, right? So ethical conduct is always decided by state, constitution, law, larger public good, right? That is a basic difference between ethics and morality. समझ में आया? अच्छा,
So if you look at Socrates was actually speaking for moral and ethical conduct. राइट मॉरल कंडक्ट कब कहते हैं जब आपको अंदर से कुछ के आ रहा है इथिकल कंडक्ट जब ऑब्लिगेशन होता है ethical is always obligation right you have to perform moral it is obligation but from within आपके अंदर से आता है कोई ऊपर से इंपोज नहीं है राइट आपके अंदर से आता है कि हेल्प करना चाहिए ठीक है समझ में आया ओके श्वेता are you able to write something now so I was talking about Socrates and his famous statement and first statement he said knowledge is virtue or the second what is knowledge of virtue what he said that knowledge is always good right it is a public good it is something he had given primacy to knowledge and he said everyone should acquire knowledge ठीक है कुछ मैं लिखवा दूं राइट ये इतना लिख लिया ये सब लिख लिया ना now write note it down 2 3 5 minutes note down 5 10 minutes Socrates gave primacy to knowledge and wisdom Socrates gave primacy to knowledge and wisdom for him comma everyone should acquire knowledge of their choice for him everyone should acquire knowledge of their choice it brings excellence in individual life and enabled him to live a happy life and prosperous life and enables him to live a happy life and prosperous life right change the paragraph and write for Socrates knowledge is or wisdom is virtuous wisdom 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 is virtuous like honesty or truthfulness for Socrates wisdom is virtuous like like honesty truthfulness it is good for individual moral and civic life it is good for individual moral and civic life civic civic moral and civic life as it only can ensure a good life as it only can ensure a good life right further change the paragraph and write further Socrates argued that second statement लिख लीजिए the unexamined life is not worth living the unexamined life is not worth living
The unexamined life is not worth living. और थर्ड वाला लिख लीजिएगा, ये वाला, नॉलेज इन क्वेश्चन इज द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल गॉड. Knowledge in question is the knowledge of the universal God. Knowledge in question is the knowledge of universal God. Further, Socrates argued that the unexamined life is not worth living, or knowledge in question is the knowledge of the universal God. He said that knowledge should always be interrogated. Knowledge always should be interrogated and questioned. He said that knowledge should be always interrogated and questioned. To inquire, to inquire about the existing practices. To inquire about the existing practices. And think whether existing practices is good for the larger community or not, or to think that the existing practices, whether existing practices is good for larger community or not. Or not. Okay. For instance, we live in community and there are many existing practices like patriarchy or the caste system. For instance, we live in existing society where patriarchy and caste system exist. We live in a society in which patriarchy and caste system exist. Yeah. We must inquire whether these institutions are good for the larger community. We must inquire whether these institutions, comma, namely patriarchy and caste system, these institutions, comma, patriarchy and caste system, again, comma, are good for larger community or not. Larger community or not. Larger community or not. Examination through knowledge, examination through knowledge is self-reflective and good. Self-reflective and good. खुद ही आप उसको करते हैं, खुद ही जानते हैं ये सही है या नहीं है. और अरिस्टोटल का कहना है, सोक्रेटिस का कहना है कि ये अच्छी बात है. यू मस्ट इंक्वायर इनटू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, राइट. जो भी चल रहा है आप उसको इंक्वायर करो और सोचो कि ये जो चल रहा है क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. अगर नहीं चल रहा है तो आप उसको अच्छाई के लिए क्या कर सकते हो. समझ में आया, राइट. Right. Now, change the paragraph and write. Socrates argued that knowledge helps us
in making a sound judgment. Helps us, Socrates argued that knowledge helps us in taking sound judgment. Sound, SOUND, sound judgment. Sound judgment मतलब होता है good judgment. Right? A good judgment. For him, for him, good is nothing but intelligence. For him, comma, good is nothing but intelligence. Good is nothing but intelligence. Good is nothing but intelligence. Knowledge ensures, full stop, knowledge ensures self-development and personality. Knowledge ensures self-development and personality. And personality. It promotes intellectual growth. It promotes intellectual growth and improve ourselves. It promotes intellectual growth and promote intellect. It promotes intellectual growth and improve ourselves. To contribute positively. To contribute positively for the society. Full stop, right? However, we never, full stop लिखिए. However, yeah, however, full stop के बाद, however, we should not, we should not be 1 minute. Let me check the word suitable. We should not be overconfident, overconfident and over proud. Overconfident and over proud on our knowledge. Our knowledge. We must be, we must be critical, we must be critical to the existing knowledge, critical, we must be critical to the existing knowledge and always should be open to gain knowledge. And always be open to gain knowledge. To gain knowledge. Socrates said that I am the wisest man alive. Said that I am the wisest man alive. I am the wisest man alive. I am the wisest man alive. I am the wisest man alive, and I know one thing that I know nothing. He used to say, I am the wisest man alive, and I know one thing that I know nothing.
इसका क्या मतलब है कि भाई नॉलेज तो एक्वायर करो, बट आपको टू मच प्राइड नहीं लेना है अपने आप में, ठीक है? हमेशा नॉलेज गेन करना है, प्राइड अच्छी बात नहीं होती है। वन मोर लाइन, ओवरऑल, लास्ट पैराग्राफ यू राइट, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, overall the phrase knowledge is virtue, overall the phrase knowledge is virtue highlights the importance of getting knowledge, highlights the importance of getting knowledge, excellence, and education in our life. Education in our life. However, we must not take too much pride. However, we must not take too much pride. However, we must not take too much pride in ourselves. Too much pride in ourselves. And always be ready, and always be ready to acquire knowledge and to gain knowledge. To acquire knowledge and to gain knowledge. बस खत्म करो। अब क्या है कि आपको कोई भी सवाल आएगा, सवाल किस तरह से आ सकता है मेंस में? आ सकता है नॉलेज इज वर्च्यू, लिख देगा सोक्रेटिस, बस इतना ही रहेगा, यहां पर लिखा रहेगा कमेंट। क्वेश्चन आएगा कमेंट, ये हो गया क्वेश्चन, राइट? ये इथिक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? आंसर यही लिखना है। जब इथिक्स में क्वेश्चन पूछेगा तो 2 4 5 आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देना रियल लाइफ का। जैसे आप जजमेंट लिख सकते हो, सबरीमला का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राइट, कि ये सही नहीं है कि वुमेन को आप रिस्ट्रिक्ट करो, राइट, वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करो, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इथिक्स जब भी पूछेगा वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा, ठीक है? तो इंडियन इथिक्स के बारे में लिखना है, राइट? आप सोक्रेटिस को नाम तो लेना ही लेना है, ऑफ कोर्स। समझ में आया? कभी हो सकता है कि आपको लिख दे ऐसे ही, सवाल आएगा, क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस, बस यहां पढ़ेगा सोक्रेटिस, आंसर यही लिखना है, यही जो मैंने लिखवाया है यही आपको लिख देना है। समझ में आया? ठीक है? कभी रहेगा, राइट, कि नॉलेज इन क्वेश्चन इज द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल गुड, सोक्रेटिस। ऐसे ही क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ऐसे इस तरह का क्वेश्चन बना देते हैं। या आई होप यू आर गेटिंग इट, फाइन, यू आर गेटिंग इट, ठीक है? नाउ कम टू प्लेटो। प्लेटो शुरू करें। अच्छा, सोक्रेटिस का मैंने आपको टाइमलाइन नहीं बताया। टाइमलाइन इन्होंने, इनका जो टाइमलाइन था that was 470 BCE to 399 BCE approximately। 470 BCE, अगर सोक्रेटिस का टाइमलाइन कोई पूछे ना कि सोक्रेटिस कब था, सोक्रेटिस, तो ही वाज 470 BCE to 399 BCE। 399 BCE में आपको पता है इनको पॉइजन दे दिया गया। दैट वाज अ लाइफ टाइम ऑफ द लाइफ टेन्योर ऑफ सोक्रेटिस। बहुत लोग यहाँ पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि सोक्रेटिस था ही नहीं, ये अरिस्टोटल ऐसे ही बता रहा है कि सोक्रेटिस भी था। ठीक है, बट सोक्रेटिस वाज द पर्सन, राइट? देयर आर मेनी बुक्स, right, there are many literature which suggest with evidence that yes, Socrates was a man,
right? समझ में आया? Shweta, you are a far, yeah, and I'm unable to, you are not even able to write something. Yes sir, no sir, repeat sir, हाँ कुछ भी बोलेगी तब तो पता चलेगा. So I hope you are getting it. Now come to Plato. And Plato's timeline was 428 27. Aristotle था वो. एक मिनट, सही तो है. His timeline was 427 BCE to कितना 347 BCE. That was a timeline of the Plato. That is a timeline of Plato. Right? Now प्लेटो का इंट्रोडक्शन लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए प्लेटो. अब मैंने थोड़ा थोड़ा प्लेटो को आपको बताया भी था कि प्लेटो कौन था. Plato was the politician. He was from Socrates, aristocratic family. Aristocratic family मतलब he was from ruling family. है ना, राजा खान मतलब कुछ कोई रूलर खानदान से था प्लेटो. He was a politician and he witnessed the entire episode what happened with Socrates, right? And if you look at the Socrates philosophy and also the context in which Plato actually born and nurtured, right? That made impact on Plato. That made impact on Plato. That transformed Plato from politician to a philosopher, right? We would not have a good philosopher like Plato without the Socrates death, right? अगर मान लो सोक्रेटिस को ऐसा नहीं हुआ होता, सोक्रेटिस भी कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते उधर, है ना. यहाँ पर भी लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं, यहाँ से उधर ज्वाइन करते हैं, है ना. जो पावर में आया उसको ज्वाइन कर लिया, है ना. ठीक है, वो भी सोक्रेटिस भी ऐसा ज्वाइन कर लेते. चलो तुम आ जाओ, तुम्हारा सारा माफ होता है ना. पार्टी ज्वाइन कर लो, सारा करप्शन का मामला खत्म. नहीं ज्वाइन करोगे ईडी लगा देंगे, है ना. तो फिर प्लेटो नाम का फिलोसफर नहीं हो पाता, राइट. प्लेटो, व्हाई प्लेटो इज प्लेटो? बिकॉज ऑफ सोक्रेटिस. And why Socrates? You know that Socrates have nothing left in writing. We don't have any scripture written by, any literature written by Socrates. So we know Socrates through the writing of Plato. So Socrates has become Socrates because of the Plato. Nahin. And vice versa. Why Plato is Plato? Because of Socrates. And why is Socrates? Because of the Plato. And why Plato? Because of the Socrates. Both are complementary to each other, right? We cannot separate them, right? Sometimes it is asked, it is said that everything Platonic is Socratic and Socrates is Platonic. Yes, it is right. Okay. Now let's see Plato. I told you that he was born in Athens in 427 BCE, and that time Athens was going through a tough time, very tough time, because he was 3 years old when the war had already started. प्लेटो 3 साल का था. देखो ना, 431 BC में शुरू हो गया था कहानी, लड़ाई हमारा 431 BC में शुरू हो गया था, और इनका जन्म हुआ है कितने साल बाद? 4 साल बाद, right? So he was only 4 years old
4 years, 4 years old. Nahi, he born after the when the war actually had already started ना. 431 में वार शुरू हो गया, 427 में इनका जन्म हुआ. Right? So if you look at Athens was going through a tough time. Peloponnesian War, was already started going on when he was 3-4 years old, and Athens and Sparta was involved. Democracy in Athens received a jolt, right? A very much problematic, because of, if you look at, sophist was giving education, right, to the young Athenian people, right? Shweta, you had disconnected, now you have connected. I was talking about the Plato. Now, why Plato? Because of the Socrates. अगर सोक्रेटिस के साथ इतना घटना नहीं घटा होता तो उसका एक फॉलोअर जो पॉलिटिशियन था वो फिलोसफर नहीं बनता. Right? If the all episode would not have been happened with Socrates, his one philosopher who was a politician would not have been transformed from politician to philosopher. So why Plato? Because of Socrates. Thanks to Socrates, his execution, his death, that's transformed, we have good philosopher, the first political philosopher. Right? Now, there is one scholar, he said that Plato is philosophy and philosophy is Plato. He is the father of political philosophy, Plato. The original writing in philosophy, or especially political philosophy, is Plato's writing. And the rest of the writing is footnotes to him. Right? जो दूसरे की राइटिंग है ना, फुटनोट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, इनकी राइटिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है. Right? Now, so Plato had written a good number of texts, good number of letters, right? And this text is not about something rubbish. No, they have important wisdom. They have important wisdom that we discuss even today. Like we thought about justice. What is justice? Now, we cannot discuss the idea of justice without discussing Plato. Right? And in the Plato's text, I told you that Plato's writing is in dialectical. It is in dialogue form. It is in dialogue form when the 5-6 people sit together and discuss. And one of the actors is Socrates. है ना? कोई मूवी बनाता है डायरेक्टर तो अपना एक फेवरेट एक्टर रखता है. नहीं होता था ना, अभी भी होता है. या यस जौहर है ना, अब उसका बेटा है करण जौहर. हमेशा शाहरुख खान मिला तो शाहरुख खान. देखो ना, उनकी सारी मूवी शाहरुख खान है ना. उसी तरह प्लेटो की जितनी भी राइटिंग है उसमें एक जो हमारा हीरो है वो है सोक्रेटिस. एंड वी नो सोक्रेटिस थ्रू द राइटिंग ऑफ प्लेटो. अगर प्लेटो नहीं लिखता तो क्या सोक्रात को हम जान पाते? सोक्रात के बारे में हम ज्यादा नहीं जान पाते. इसका मतलब सोक्रात का जो एग्जिस्टेंस है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोक्रात एंड हिज फिलॉसफी बिकॉज ऑफ द प्लेटो. राइट? सो बोथ are complementary and supplementary to each other. Nahi, both are complementary and supplementary to each other, right? And let me tell you, both were teacher and the student. Both were teacher and a student. When Plato born in 1427, right? कहीं आपको ये लिखे 428 मिल जाएगा. घबराना मत, right? एक आध साल का इधर उधर होता है, क्योंकि बहुत स्कॉलर मानते नहीं एक साल पहले हुआ था. Right? When he born, Peloponnesian War was already going on. Right? Sophists were already engaged in how to win election. Right? And teaching rhetoric, eloquence, teaching along with mathematics, music. Sophist was like half university that time. अपने आप में यूनिवर्सिटी हुआ करता था. Like इंडियन सेजेस एंड सीयर्स. आप देखो ना, इंडिया में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, सेजेस एंड सीयर्स, वो खुद में एक आधा यूनिवर्सिटी टाइप हुआ करते थे.
नहीं, नॉलेज देते थे, शस्त्र का भी और शास्त्र का भी। नहीं, शास्त्र भी पढ़ाते, शास्त्र मतलब डिफरेंट नॉलेज सिस्टम को भी पढ़ाते थे और शस्त्र विद्या भी पढ़ाते थे। सिमिलरली वाज अ सोफिस्ट, they were like half university, but later on if you look at sophist has started taking money in exchange of giving knowledge, right? The sophist used to teach how to win election, how to acquire power, right? Now when you acquire, do everything for the election and acquire power, you subside many ethical conduct, nahi, right? You pursue some unethical things, आप झूठ बोलते हो, हाँ, कि मैं पूरी दुनिया में मतलब ऐसे इतने लोगों को ये दे रहा हूं, इतना ये हो जाएगा, उतना वो हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा। देखो ना क्या क्या बोला जा रहा है, आप सुनते होंगे, हाँ, विकसित भारत की कहानी पता है, आप लोग बच्चे हो। मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई। हम अब विकसित भारत कब बनाने रहे, कब बना रहे विकसित भारत? 247 में 100 साल पूरा होगा और भारत एक विकसित होगा। ये कहानी 20 साल पहले, 24 साल पहले भी चली थी कि भारत को 2020 तक विकसित भारत बनाना है। पता है आपको? ये आप वही ना, मनोल, आप लोग बच्चे हो, राइट? यू लिक दैट टाइम वी हैड विजन, ओहो भारत वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री बाय द 2020 when I was in 12. That time I was in 12 standard, right? Give me 1 minute. Give me 1 minute and then. Yeah. So, yeah. So Athens was having very hard time those days, right? And you know that in war ended in, when war ended, अच्छा मैं ये बता रहा था विकसित भारत की कहानी। हम लोग थे 12 में थे तो एक्चुअली ऐसे ही कहानी बुनी जा रही थी कि 2020 तक इंडिया शैल बी अ डेवलप्ड कंट्री, right? And there were so many programs and policies was implemented those days, right? But look at, we have crossed 2020. सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने के नाम पे लोगों को, हाँ, बुद्धू बनाना अच्छी बात नहीं है ना? ठीक है, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे सपने देखो कि हम, वी शुड टेक ए इंक्रीमेंटल स्टेप, राइट? है ना? वी शुड वर्क, वी शुड फोकस ऑन पीपल, देयर लाइफ, राइट? और हम गाना गा रहे हैं डेवलप्ड होगा, क्या करोगे डेवलप होकर के?
ना 40-80 करोड़ लोगों को हमें राशन देना पड़ रहा है। पूरा 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 पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। 80 करोड़ को हमें राशन देना पड़ रहा है। 80 crore people are dependent on government ration. Think about, right, what kind of development we have achieved, right? We have, the corporate gharana, having lots of money. Me and 80 crore people are actually struggling for your ration. We don't need ration, basically, government ration. Right? We need good education, quality education. We need quality health. Right? We don't need education about ration. People will acquire ration. The government never will focus on this. Okay, make the, जैसे आईएएस का एग्जाम होता है ना, भाई टीचर का नेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन क्यों नहीं होता? यू रिक्रूट गुड टीचर, जो कुछ नहीं करता वो गांव में टीचिंग करता है, गांव में नहीं, या कि कुछ पैसा मिल जाएगा, टीचिंग क्या करेगा? वो नेवर गोज टू स्कूल, अपना दुकान खोल के बैठा है, वहां पंचायती कर रहा है, नहीं, right? Now look at the developed country, which gives more priority to the primary teacher. Primary teacher are, let me tell you, utmost important in society, right? Excellent people should join primary teacher. Excellent people. Right now, look at the excellent people are joining IAS. Now they should join primary education. Now let me tell you, within 15 years, India will transform. Within 50 to 20 years, India will transform through the providing quality education. We need lots of money to invest on education. We are investing only 3% on education. है ना? कोठारी कमेटी 1986 में कह गया कि भाई 6% करो एजुकेशन के ऊपर। डेवलप्ड कंट्री 10% करता है भाई, आप करो 3%, पॉपुलेशन देख लो, राइट? क्या कर रहे हो? और फिर आप सपने दिखा रहे हो भारत डेवलप्ड हो जाएगा। इट इज नथिंग, इट इज रेटरिक। रेटरिक, अब समझ में आया रेटरिक? इट इज नथिंग, इट इज रेटरिक टू अट्रैक्ट वोट, टू गेट वोट, nothing else, to remain in power. But you are morally and ethically corrupt. You are not speaking truth. You are lying with the people. Right? The common people are not so aware. No, they don't know about the knowledge. They are not critical. Right? आप उसको बोलोगे ऐसे ऐसे है तो वो समझ जाएगा ऐसे. Look at the people who are believing staunchly. नहीं. Look at the people, common masses. They are believing on the government. Yes, this government will transform India to develop the country. Now, what? Now it will develop only when each individual of this country will develop. Their life will develop. आपके बच्चे एजुकेशन पा नहीं रहे, आपके वो बोल रहे कि मेरा देश डेवलप हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ ना? तो कह रहे ना, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे, स्कूल की कंडीशन खराब है, टीचर नहीं है स्कूल में, कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर कौन करता है? मैं आई बिलोंग टू बिहार, राइट? दोज हु हैव लिटिल टैलेंट गो आउट ऑफ बिहार। व्हाई? इन बेटर अपॉर्चुनिटीज, राइट? और जो कुछ नहीं करता है वो वहां टीचिंग कर लेता है। नहीं, I'm not claiming that all teachers are bad. No, it is not that. The maximum are. They are not capable to teach. They don't know language. उनको सही से ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती है ना? ना उनका अपना सब्जेक्ट आता है, बस ज्वाइन कर लिया कि नौकरी है, महीने महीने पैसा आता रहेगा। They ethically they are corrupt. Now why don't people believe? You people don't believe on Sarkari school, right? Even the Sarkari teacher, the government teacher, does not send their children to their own school. अपने स्कूल में नहीं भेजता है ना? तो who are sending the government school? Those who are actually unable to even feed themselves. Let me tell you, struggling for feeding themselves.
those who are sending their children to the government schools. जिसको खाना पीने से ज्यादा कुछ पैसा मिल रहा है ना, if they are earning a little more than their stomach requirement, they are sending their children to private school, right? And on the name of private school, there are many schools mushroomed, जो झूठ बोलते नहीं. Anyway, तो ये बात है कि हम लोग देख रहे थे. Now that was happening in Athens too. ये एथेंस में भी हो रहा था. कहानी वहां डेवलपमेंट की नहीं थी, कहानी वहां कुछ और था, राइट? कहानी वहां कुछ और था. ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये कहानी आज की कहानी नहीं, ये पुरानी कहानी है. और उससे सबसे बड़ा जो दुखी इंसान था वो था सोक्रेटिस और उनके फॉलोअर प्लेटो. ठीक है, देखो हम दुनिया है ना, दुनिया को जो हमारा समाज है उसको हम स्वर्ग नहीं बना सकते, राइट? हम जो हेवन सिटी स्टेट है वो नहीं बना सकते, बट जो है उसको तो सही बनाओ, उसको तो सही करो. एक स्टेट को सही से स्टेप तो लेना चाहिए. दे मस्ट इंश्योर गुड लाइफ, दे मस्ट टॉक अबाउट जस्टिस, राइट? दे एक्चुअली सेट अप एजुकेशन, गुड एजुकेशन, राइट? दे मस्ट ट्रेन पीपल. Now, these all are talked about, right? There should be some ethics and morality. Morality in your conduct, right? The ruling class must have some quality. The ruling class must have some quality, and one of the prominent quality is wisdom. यहाँ पर तो बोला जाता है कि आपने मास्टर की है कि नहीं की डिग्री दिखाओ, मांगते हैं ना, हाँ, डिग्री दिखाओ, राइट? यू आर नॉट क्वालिफाइड पर्सन. बहस यहाँ पर ये है कि डिग्री दिखाओ. बहस ये नहीं है कि नॉलेजेबल पर्सन शुड हैव देयर ओन पोजीशन. नॉलेजेबल पर्सन जो है ना, बहुत लोग नॉलेजेबल है, रोड पे घूमते हैं. लेट मी टेल यू, many people who are knowledgeable, they're on the road. If they don't have connection, you know, nepotism, chacha nahi hai, mama nahi hai, they can't become, right? They can't get a good job. The 99% of India's job is on the base of nepotism. अरे चाचा जॉब लगवा दो, अरे मामा जॉब लगवा दो, अरे चाचा. Look at the system we have created, we have constructed. Now this all chacha mama tau system is actually bad. Look at the judiciary. It is highly based on nepotism, right? Now that is not good. Am I making sense? So those who ever will be elected through the rhetoric, of course, will be morally declined, right? That was the context of the Athens. समझ में आया? So when, if you look at the Plato was a very become young person, you know, Athens was in bad shape. It was lost war with Athens. There was a, you know, fight between tyrant and democracy. Democracy declined totally. There was a, you know, ethical decline, moral decline. There was a complete freedom, right? Unbridled freedom, right? Now, entire things he captured in one book. That is, you know, he wrote, I told you that. How many books he wrote? He wrote 33 books and 13 letters. 33 books. In total, he wrote 33 books and 13 letters. That we have. नो एंड है ये. आप ये एंड लिखा मैंने, लोग एंड ऐसे भी लिखते हैं, मैं ऐसे लिखता हूं. एंड 13 letters. He wrote 33 books and 13 letters. And one of the most prominent book was 3. अगर आप देखोगे कि सबसे जो राइट इंपोर्टेंट किताब थी वो किताब 3 था.
एक का नाम था रिपब्लिक, दूसरा का नाम था लॉ, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन and the law. These are the famous book by Plato. Right? हमें पढ़ना है एक किताब, The Republic. Right? So this was the introduction of the Plato. जो चैप्टर आपको दिया किताब है ना आपके पास ब्लू बुक, उसको पढ़िए, और कल मैंने आपको प्लेटो के बारे में बताऊंगा थोड़ा और ज्यादा, और प्लेटो के रिपब्लिक में क्या पढ़ना है हमें, that we will start discussing on Monday. ठीक है, कल तो है नहीं, Monday. One more week you can, एक वीक तक ऐसे ही चलेगा, अगले उसके बाद कर देंगे, ठीक है. अरे लास्ट एक डेढ़ घंटा हो गया ना, 25 हो गया, 5 मिनट में क्या पढ़ोगे? नहीं बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा. थोड़ा सा एक बैच है उसको खत्म कर लें. देखो हमारे देश में मैं तो सोचता हूँ कि देयर शुड बी ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे टीचर का रिक्रूटमेंट होना चाहिए. जो बेस्ट टैलेंटेड लोग हैं ना उनको आप प्राइमरी एजुकेशन में भेजो, राइट. उन लोगों के पास जैसे आईएएस का होता है, उनके पास सब नॉलेज होता है, उनको पेमेंट दो भाई, उनको अच्छा पेमेंट. टीचर का रिस्पेक्ट खत्म हो गया लोकल लेवल पे. क्यों टीचर ऐसे मतलब हुड़दंगी कर रहा है? क्योंकि अच्छे लोग टीचर नहीं बन पा रहे हैं. जो बेकार लोग बैठा है वहां पर, जो अच्छे लोग बैठे वो दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं. बिकॉज टीचर को आप 6,000 8,000 दोगे तो कहां काम करेगा बताओ, है ना. State is not taking steps in favor of that. हम 40 करोड़ 80 करोड़, तुम 80 करोड़ को राशन दे रहे हो, कल 90 करोड़ को देना पड़ जाएगा. नहीं हो सकता है. हो सकता है कल 90 करोड़ लोग राशन के लिए मांगे, हाँ कल 100 करोड़ राशन मांगे कि भाई मेरे पास राशन नहीं है, खत्म हो गया, अर्निंग खत्म हो गई. अब ये अर्निंग कैसे खत्म हो रही है? लोगों की कैपेसिटी नहीं है. ऐसा नहीं कि मार्केट में जॉब नहीं है, मार्केट में जॉब है, मार्केट में टैलेंट नहीं है. लुक एट इंजीनियर्स, right? College after college producing engineers, but they are not able to get job, right? Why? Because there is a no up to date, they don't have update knowledge. वहां का जो टीचर है वो अपने आप में शान में है, because of the ethical decline, moral decline of that teacher, right? This is called moral right? जो टीचर नहीं पढ़ाता है, बहुत सारे टीचर पूरे 6 महीने में 2 क्लास लेते हैं, 3 क्लास लेते हैं, नहीं लेते हैं. बहुत सारे करते हैं, अपनी नेतागिरी में रहते हैं, कहां से क्या उनको मिल जाए, किसी यूनिवर्सिटी में एक अच्छा सा पोस्ट मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, कहां वाइस चांसलर बन जाऊं, इस चक्कर में रहते हैं, नेता के चक्कर में, उधर के चक्कर में, राइट. नेता के पीछे भाई आपको इलेक्शन कैसे जितवा दूं, तुम्हारा क्या काम है? टीचर का काम इलेक्शन जितवाना नहीं है. टीचर का काम है स्टूडेंट अगर सही रहे, टीचर फिट है, नहीं यहाँ पर है. Anyway, there are many problems in India's political culture, right? We will discuss and learn from the Plato, right? We are not studying Plato because we want to know history. No, it is not history. It is something contemporary. We can learn many things what Plato had said. We can actually see what is happening around us that was happening there also, right? And when ethical and moral decline is happening, now it has several consequences. See? So see you on Monday. Read 3 chapters जो शुरू में है, प्लेटो को भी पढ़ जाइए.
and we'll discuss. पढ़ जाइए प्लेटो को. And I hope you are doing from Sensor TV. कर रहे हो ना काम? I do have belief that you are doing. Huh?